अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसिंग की क्विज़ नंबर 1 करेंगे, जो बैच नंबर 1 की फर्स्ट क्विज़ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 क्विज़ेस जो हैं वो ओपन हो रही हैं। तो यहाँ पे क्विज़ पे हमने क्लिक किया और टेक क्विज़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग है, प्रोजेक्ट स्कोप है, उसके बाद है जी ड्राफ्ट फेज है और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल है। प्रोजेक्ट टाइमलाइन इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप, इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। What should a person do if she is unable to identify any skill set or talent within him herself? Forget about freelancing, learn a random digital skill, explore the freelance marketplace and check which skill exact him her the most. Select the field which has the highest paying jobs. Unable to identify a skill set or talent within himself. Explore the field. ये इसका करेक्ट आंसर है। Explore the freelance marketplace. Save and move to question number 3. Learn a letter R in smart technique for goal getting is an abstractive of रिटेंशन है जी, रीजनिंग है और रियलिस्टिक है और क्या है जी, रिमार्केबल है। तो रियलिस्टिक इसका करेक्ट आंसर है। स्मार्ट गोल अगर आपने वीडियो देखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू बी ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर वन मस्ट हैव फॉलोइंग थिंग एक्सेप्ट। एक चीज़ के अलावा वो क्या चीज़ें हैं जिनको फ्रीलांसर ने देखना है। एंड in demand skill with good expertise, proficient communication and management skill, attractive portfolio, none of the above. To be a successful freelancer, none of the above है इसका करेक्ट आंसर। सेव करते हैं जी और बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following is the use of language to transfer information through speaking? वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल है, रिटन कम्युनिकेशन है और विजुअल कम्युनिकेशन है। तो वर्बल कम्युनिकेशन हम जब बातचीत करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। व्हेन प्रोजेक्ट प्राइस शुड बी डिस्कस्ड in the middle of the project, at the end of the project, after submitting the project, at the start of the project। तो स्टार्ट में ही हम अपना जो है प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेंगे। सेव एंड मूव। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, what will happen if you do not polish and invest time in improving your skill? Your profile will grow, you will start getting more orders। ये नहीं हो सकता। हाई स्किल कंपटीटर विल रन ओवर यू, योर फ्रीलांसर कैरियर विल एक्सपायर। तो हाई स्किल कंपटीटर विल रन ओवर यू, हमको बीट कर देंगे अपनी स्किल को वो पॉलिश करते हुए। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is the exchange of information through body language, facial experience, gesture, etc. verbal communication, non-verbal communication, written communication और है जी विजुअल कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेस, जेस्चर
और रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल और नॉन वर्बल में आएगा। ठीक है जी। Question number 9 है, if you have a multiple skill, it is recommended to start your freelance career with the most complex one, the comparatively similar one, the one with bigger projects, the the one which is suggested by the expert। अगर आपके पास बहुत सारी स्किल हैं तो आपने रिकमेंडेड टू स्टार्ट योर फ्रीलांस कैरियर, तो कहाँ से आपने स्टार्ट करना है जी? बिगर प्रोजेक्ट नहीं है जी, कंपेरेटिवली सिमिलर वन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो सकता, द वन विच इज़ सजेस्टेड बाय द एक्सपर्ट। तो ये बेहतर है जी जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूटिलाइज रिटन कंटेंट इज रेफर्ड टू एज वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, और है जी विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये रिटन में आएगा, दी एनी कम्युनिकेशन दैट यूटिलाइज रिटन कंटेंट। ठीक है जी। सेव कर दिया जी। अब हम अपना रिज़ल्ट देख लेते हैं और ये आपके सामने हैं हमारे 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो एक हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है, प्लीज़ उसकी जो है कमेंट में आप मुझे उसकी इस्लाह करा दें। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।